क्या होने वाला है आज के ब्लॉग में कि आप मेरा ब्लॉग शुरू से लेकर के आखिर तक देखो। तो अगेन आई एम बैक विद माई कुकिंग ब्लॉग विद सम देसी तड़का मसाला कुकिंग शुकिंग एंड सम वेरिएशंस एंड सम टेक्निक। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास उसका कुछ नाम नहीं है, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ गार्लिक ब्रेड एंड पिज्जा, both combined together, and this is like wholesale kind of invention you can say, or maybe experiment you can say, or with time ना आप mix कर करके चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत variation करके we came up with a new recipe wholesale. तो I'll be helping you guys to know how to prepare garlic का जो butter होता है, garlic bread में जो butter लगता है, तो वो कैसे बनाते हैं, एंड उससे बन से जो घर की चीज़ें जो आपके पास घर में ही होती हैं जनरली बेसिक चीज़ों के साथ आप कैसे ये पिज़्ज़ा कम गार्लिक ब्रेड का मिक्सचर जो है वो आप बना सकते हैं। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग विद अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड विद माई थॉट ऑफ वेरिएशन एक्चुअली जो मैं हमेशा आप लोग को हर वीडियो में हर कुकिंग वीडियो में बताती हूँ कि वेरिएशन अपनी कुकिंग में लाए तो कुकिंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, एंड देन यू एंजॉय कुकिंग। कुकिंग फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुकिंग एक काम नहीं लगता, फिर कुकिंग ना एक मज़ा आता है कुकिंग करने में, यू एंजॉय कुकिंग होलसोल। तो या so let's get started with my cooking, and with very basic ingredients we gonna make this garlic cum pizza thing, and I'll show you how it's prepared and how it tastes. We're gonna do the taste test as well, and how to maintain that crunchiness in the bottom with the melted cheese on top, and with all the layers and all the stuffing in between, and the garlic oil जो आपका garlic butter है वो कैसे आप अच्छे से ब्रेड के अंदर सोक इन कर सकते हो कि हर एक बाइट में यू कैन टेस्ट दैट गार्लिक, एंड बटर में स्पेशली आप कैसे इन्फ्यूज़ करा सकते हो। बिकॉज जो गलती हम लोगों से अक्सर होती है वो ये होती है कि हम गार्लिक और बटर को साथ में हम जो है गर्म करते हैं। जो जनरली मैंने देखा है या सुना है कि हाउ कैन वी मेक गार्लिक ब्रेड, गार्लिक और बटर को मिला दो और गर्म कर दो। इवन मी आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स, माइक्रोवेव करती थी और फिर बनाती थी, एंड उसमें गार्लिक बनता नहीं है। मतलब ना व्हाट इज द मेन थिंग वी आर लुकिंग फॉर कि वो जो गार्लिक है उसका जो फ्रेगनेंस है वो बटर में इन्फ्यूज हो जाए। तो उसके लिए देयर इज अ टेक्निक विच आई एम गोना शो इट इन माई ब्लॉग इन माई वीडियो। तो वो उसमें माइक्रोवेव यूज नहीं होगा, अगेन हमारा देसी तक बड़ा थोड़ा सा लगेगा, देसी तरीके से हम बनाएंगे। एंड लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग एंड लेट्स गेट द ब्लॉग स्टार्ट। तो चलिए हम अब इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, एंड देन हम फाइनल अपनी रेसिपी देखते हैं, एंड देन आई विल बी शोइंग यू द टेस्ट टेस्ट, एंड फिर होता है मजा। सो सी यू। Let's start with our recipe, and the ingredients are, the first ingredient is garlic, as it's like a garlic bread, so of course some coarsely finely chopped garlic. Then we'll be needing onion. You can actually add any kind of vegetables, just whatever you have at home. Then we are adding some corns, sweet corns, some olives, buns of course, or bread if you have some bread at home. Then we'll be needing some cheese. I'm using today cheddar cheese and some mozzarella cheese, some butter to of course make the garlic bread butter, and chili flakes. You can use oregano, you can use any kind of seasonings. We have pizza seasonings, we have spice seasonings, so use your variations and whatever I have at home tonight actually. So I'm using all of the things, and let's roll the recipe now. So first we have to take a pan to prepare our garlic sauce. So for that we'll be using butter, but before butter we have to use any kind of cooking oil, just 2 teaspoon of it, just a little bit, because अगर आप डायरेक्टली बटर डाल देते हो तो वो जो है ना थोड़ा जम जाता है हमारा गार्लिक बटर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी विल बी यूजिंग 2 टीस्पून अप्रोक्सीमेटली अपना कोई भी कुकिंग ऑयल। आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल फॉर नाउ, रिफाइंड भी आप यूज कर सकते हैं। देन सम बटर, 2 tablespoon of butter we will be using, and we will put it into sim. हम धीमी आंच पे कर देंगे इसको, and we'll let it melt. We'll let it melt अच्छे से पूरा। जब बटर मेल्ट हो जाएगा
So you can see the sizzle how it is, और इतनी अच्छी खुशबू जो बटर मेल्ट होने वाली होती है. It smells so good. So that sizzling is happening. So जैसे ही ये बटर मेल्ट हो जाता है, what we have to do is we'll switch the heat off. फ्लेम अपनी ऑफ करेंगे. We'll add the garlic. ठीक है, और जो भी आपकी सीजनिंग है, whether it's pizza seasoning, you have oreganos, you have chili flakes, any seasoning will do, or any spices will do. If you don't have any seasoning, रात में भूख लग रही है, you don't have any seasoning late night में, तो you can even use chili flakes, pepper, black pepper आप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी आपके पास जो भी हो. तो as you can see, बटर मेल्ट हो चुका है, तो हम इसको उतार लेंगे. हम इसको उतार लेंगे और इसमें हम सारा गार्लिक अपना डाल देंगे. So it's a very easy way to prepare your midnight snacks or your evening snacks for kids, for yourself. So it tastes really good. तो आप देख सकते हैं ये आपका garlic already melted है, and that is the time when you will put any sort of seasoning. I like chili flakes, so I'm gonna put chili flakes. And some pepper to it, and I'll give it a stir, and we'll wait for some time. We'll do the rest of the preparation. Until then, like no, by that time it will be ready. So this is how the garlic oil or garlic butter will be looking, and I have already prepared it before. So yeah, this is how it's gonna look. It will be all the garlic का जो खुशबू है या फ्लेवर है वो बटर में ना पूरा इन्फ्यूज हो जाता है, बिकॉज इट्स लाइक पाइपिंग हॉट बटर, उस पर हम गार्लिक डाल रहे हैं, तो इट्स ऑल इन्फ्यूज्ड. So we'll wait for some time. Meanwhile, we'll do the rest of the preparation. Okay. So now we have a bun. If you have bread at home, white bread, brown bread, any bread will do. So उसको अगर बन है तो उसको हाफ में डिवाइड कर लेना है. ब्रेड है तो फिर आपकी पूरी ब्रेड जाएगी. So I have these buns at home. तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, and yes, that's how it looks. फिर उस पे ये मैंने मेरा पहले से ही बना हुआ है. So this garlic oil is already ready, like butter. We will be putting it on the bread. So this is basically, it's gonna be one side of it. तो हमने इनको दो पीसेस में डिवाइड कर लिया. थोड़ा सा आप गार्लिक के पीसेस भी रख सकते हैं. इट टेस्ट रियली नाइस. इवन आप इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं जब आप एंड में डालते हो. इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, तो जब आप डालते हो आप उस टाइम पे गार्लिक, तो उस टाइम पे आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो. इट टेस्ट रियली गुड. आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट. सो या, दिस इज हाउ इट्स गोना बी. हम दूसरे में भी ट्राई लगा देते हैं ये, और ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें ऑयल को बनने में. हमारा अभी वो वाला भी ऑयल तैयार हो ही गया है, क्योंकि बहुत पाइपिंग हॉट होता है ऑयल, जो बटर जो होता है उसमें फिर जो इन्फ्यूज़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो या यू जस्ट स्प्रेड इट नाइसली. अच्छे से कॉर्नर्स कवर करने हैं ताकि गार्लिक का जो फ्लेवर है वो हर तरफ आए अच्छे से. Yeah, that's about it. Then we'll start adding our vegetables. So onion,
this is how it will look, as you can see. Then on top we will be putting a little bit of chili flakes, because yes, we are fond of spices. So we put a little bit of chili flakes and some pepper. And now comes the preparation, how you have to basically plate it in the oven. For that, what you have to do is, जो ये आपकी ट्रे है, ओवन की ट्रे, वो जो हमने ऑयल बनाया था विद गार्लिक, जहाँ जहाँ आप बन रखोगे उसके नीचे थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है, just like this, with garlic. And then we will put this. And meanwhile, of course, what we have to do is like my video, subscribe the channel, hit the like button and comment below. Joking guys, you have to do this of course, but meanwhile you have to preheat the oven also. So that is the key, because we will be baking in the oven. Hey guys, so it's done. The bread is nicely crusted from down and ना ऊपर से आप देख सकते हो चीज़ melted है, हमारा मोज़रेला चीज़. अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड पुट द फुल स्लाइस एंड और ज़्यादा लगा सकते हैं. हम लोग ने चेडर चीज़ ज़्यादा लगाया है, बट मोज़रेला हमने सिर्फ थोड़ा सा ऊपर लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड इट्स गोना टेस्ट यमी, इट लुक्स रियली नाइस एंड पूरे स्पाइसेस के साथ सब कुछ है इसमें. So let's do the taste test. Can you hear that crunch? I know it's not that clear, but yeah, I can feel that crunch. Garlic and inside sauce is really nice. So try it once. I'm sure you will love it. This is like one of the dish which we really like it. Me and my husband, we generally prepare at night or maybe midnight, like in evening we prepare this kind of a snack. And I haven't learned this from anywhere. It was our invention, whole soul, me and my husband's invention, and we love it. So try it at home, let me know how you like it, and in case if you have olives, try it with olives. It tastes really good. If not, then it's fine. You can use any sort of vegetables, whatever you like. And comment below if you really like my recipe and if you have any sort of variations of your side, what I can improve in my recipe. And like my video, subscribe to my channel and hit the bell icon for more video and updates. See you in my next vlog and keep watching Desi Mr and Mrs. Vlogs. Thank you.